MBBS. One-step solution for all medical studies. In this video, we will discuss very important topic under the pharmacology, that is superinfection. It is very important because it comes as SAQ in your theory exam, as well as from such important topic, MCQs are asked in your PG entrance exam. But now, before talking about the superinfection, it is very important to have first crystal clear concept of normal microflora. So these are the normal microflora which are present in our body, and they play a very important role of symbiosis. It means from us they get food and shelter, and in return of this they help in the digestion of food, produces vitamin K, and as you all know, vitamin K is very important for the blood clotting. Then most important function, that is these normal microflora which are present in our body restricts the growth of the pathogenic microorganism. Now question is that how these normal microflora restricts the growth of the pathogenic microorganism. It is very simple. As for the growth and multiplication, each and every microorganism will need food and shelter. But यहाँ पे food and shelter का तो सवाल ही नहीं है, because food and shelter is captured by our these normal microflora. That is why these pathogenic microorganisms are not able to get food and shelter. तो अल्टीमेटली क्या होता है, उनकी ग्रोथ जो होती है पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स की, उनकी ग्रोथ हो जाती है रेस्ट्रिक्ट. सो बिकॉज ऑफ दीज नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा वी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय द पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स. आपने एक बहुत फेमस कहावत सुनी होगी, जिस तरीके से लोहा लोहे को काटता है, उसी टाइप से एक माइक्रोऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट. Now this is the proximal part of the ascending colon, and in the colon these are our normal microflora, and these are pathogenic microorganisms, but their growth is restricted by our these normal microflora. Now if a person is taking broad spectrum antibiotic, then these broad spectrum antibiotics will kill our these normal microflora. But these pathogenic microorganisms are resistant to these broad spectrum antibiotics. और इस चीज का ये पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स खूब अच्छी तरीके से फायदा उठाते हैं. कैसे, देखो. सो नाउ बिकॉज ऑफ दीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, our these normal microflora are no more present in the gut. That is why now these pathogenic microorganisms will easily get food and shelter in the gut. And now these pathogenic microorganisms start to grow rapidly. And the most common pathogenic microorganism which start to grow rapidly is Clostridium difficile. So this is the Clostridium difficile in the lumen of the gut, and this is our gut epithelium, and these are the blood vessels present in the submucosa of the gut, and in the blood these are the inflammatory cells. Now in the lumen of the gut, these Clostridium difficile produces toxin A and toxin B. As you can see, these are the tight junctions which are present in between the cells of the epithelium of the gut. But these toxins will disrupt these tight junctions. It means these toxins are cytotoxic. So here you can see clearly that these toxins have destroyed the cells of the epithelium. And now to kill these Clostridium difficile, our these inflammatory cells start to recruit at the site of their growth. Now because of the enormous recruitment of the inflammatory cells at the site of infection, they form a plaque-like structure, and this plaque-like structure is covered by this membrane-like structure, and that is called pseudomembrane. So within the plaque you will get inflammatory cells, toxins, dead epithelial cells, and many more cells. So because of Clostridium infection, inflammatory cells in the blood will rise. It means there is a leukocytosis, and because of production of interleukins, patient will get fever and also abdominal pain or abdominal cramps.
as our normal microflora are no more present, and as you all know, they helps in the digestion of food. That is why proper digestion of food will not take place. That is why patient will have diarrhea. Patient will have diarrhea. And as from these gaps within the epithelial cells, blood can ooze out in the lumen of the gut. That is why patient may have bloody or watery diarrhea. And in the stool you will get toxin A and toxin B. And this condition of formation of pseudomembrane in the colon, it is called pseudomembranous colitis. तो अगर आप pseudomembranous colitis का ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये जो टेररिस्ट है दैट इज Clostridium difficile, इसको खत्म करना पड़ेगा. या तो आप ये Clostridium difficile के ऊपर मेट्रो ट्रेन चला दो या फिर वेन चला दो. सो ट्रीटमेंट ऑफ pseudomembranous colitis is either you give metronidazole or vancomycin. metronidazole और vancomycin. ओके, तो ये था नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी में इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस लेटर. And now you are ready to understand the concept of superinfection. Now let's suppose this is pathogenic microorganism and its name is A, and this A enters into the body of the Ramu. So now Ramu is infected with A, and now in the body of the Ramu this A undergo rapid multiplication, and because of this Ramu gets symptoms and feels uneasiness. और ये हमारा रामू जाता है कहाँ पर? सीधा जाएगा ये मेडिकल वाले के पास. ये डॉक्टर के पास नहीं जाएगा. कहाँ जाएगा? मेडिकल वाले के पास. और मेडिकल वाले ने इसके साथ क्या किया? इसको पकड़ा दी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. नाउ दिस रामू टेक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. और आगे की स्टोरी आपको पता ही है. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमारे नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा को क्या करेगी? बर्बाद कर देगी. एंड बिकॉज ऑफ दिस these pathogenic microorganisms will start to grow and multiply. So their name is B. तो सबसे पहले A ने इन्फेक्शन किया था और फिर पेशेंट ने एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली ले ली. Then because of this a new infection is produced in the body of the patient. So such new infections are called as superinfection. So what is superinfection? So these are the new infections which occurs because of intake of broad spectrum antibiotics. So which are those broad spectrum antibiotics which may cause superinfection? So these are cat CC. So from C it is cephalosporins, और most commonly जो थर्ड जनरेशन की cephalosporins होती हैं they mostly causes pseudomembranous colitis. Then from A these are aminoglycosides, from T these are tetracyclines, from C chloramphenicol, from C clindamycin. So these are very important for your PG entrance exam point of view. अब ये न्यू इन्फेक्शन पेशेंट की बॉडी के अंदर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं? सो याद रखना जितनी भी ट्रैक्ट्स हैं लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स, इन ट्रैक्ट्स के अंदर मोस्ट कॉमनली न्यू इन्फेक्शंस आर प्रोड्यूस्ड. और फिर उसके बाद ओरोफेरिंग्स. सो दीज आर द साइट्स वेयर न्यू इन्फेक्शंस आर प्रोड्यूस्ड. अब ऐसे कौन कौन से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे में कॉज न्यू इन्फेक्शन? सो दीज आर Clostridium difficile, Candida albicans, Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus. अब क्लोस्ट्रिडियम के अंदर ये जो डी है ये आपको रिमाइंड कराएगा कि अगर आप ड्रग लोगे एंटीबायोटिक ड्रग देन आई विल अपीयर. सिमिलर टू दिस डी इन द कैंडिडा एंड डी इन द स्यूडोमोनास दे आर सेइंग दैट वी आर ड्रग लविंग. मतलब ड्रग की प्रेजेंस में, एंटीबायोटिक ड्रग्स की प्रेजेंस में वी विल स्टार्ट टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई. अब आ जाओ प्रोटियस. प्रोटियस कैसे याद रखोगे? तो प्रोटियस के अंदर ये जो टे है
इट विल टेल यू दैट इट इज रिलेटेड टू टेबलेट, मतलब आप एंटीबायोटिक टेबलेट लोगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक टेबलेट लोगे तो आई विल ग्रो एंड मल्टीप्लाई। अब आ जाओ स्टेफिलोकोकस के ऊपर। तो स्टेफिलोकोकस के अंदर जो फेलो बोल रहा है, स्टेफिलो मतलब जब आप ड्रग लोगे तो मैं फैलूंगा, मेरी ग्रोथ करूंगा। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर, बिकॉज ऑफ टेकिंग ऑफ broad spectrum antibiotics, such microorganisms are most commonly causes superinfection। एक और important point ये है, as this normal microflora produces vitamin K, that is why they help in the blood clotting, now if a patient is on warfarin आपको पता है ब्लड क्लॉट को क्या करती है, डिक्रीज करती है, और विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉट को इंक्रीज करता है। सो विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, मतलब ये जो वारफेरिन का इफेक्ट है ये हमारी बॉडी के अंदर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो अगर पेशेंट को सुपर इन्फेक्शन हुआ है तो जितना वारफेरिन का डोज पहले देते थे उससे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डोज कम करना पड़ेगा। So my dear medicos, that's all for today. If you really gained something from this video, then please share this video as much as possible to your needy friends.